sure we have it. It's not something you're born with. You have to create it. You have to actually make it work for yourself. But where does self-esteem come from? ये आता कहाँ से है? हम कैसे अपने आप को सेल्फ एस्टीम दे सकते हैं? बहुत आसान है, ये हमारे थॉट्स में होता है. अगर हम सवेरे उठ के अपना जब ब्रश करते हैं कहेंगे, ओ गॉड ये आईज ठीक नहीं लग रहे हैं, ओ डार्क सर्कल्स हैं, ओ द नोज इज नॉट गुड, ओ द लिप्स आर नॉट गुड, tuck, 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 you started making holes in the bucket. And what happens when you make holes in the bucket? You start reducing your self-esteem. Self-esteem क्या होता है? वो हमारा self-worth होता है. यानी कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं. चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, कोई कहे अरे you're not looking good. जब हमारी self-esteem high होती है, हम उन्हें कहते हैं रास्ता नापो, हमें आपके फीडबैक की जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं तो कोई एक बार खाली बोल दे यू आर नॉट लुकिंग गुड, चैप्टर क्लोज्ड. आप उस दिन घर के बाहर नहीं जाओगे. आपको इतना बुरा लगेगा, आप सारा दिन बैठ के सोचोगे कि आई एम नॉट लुकिंग गुड. ये कहाँ से आया? उन्होंने तो बोल दिया. आपने खरीदा क्यों? आपने अपनी लाइफ क्यों दी उसको? व्हाई हैव यू गिवन योर ब्रेथ्स टू व्हाट दैट पर्सन टोल्ड यू? बिकॉज you don't believe you have self-worth. Our self-worth is equal to our self-esteem, and that can only be created by ourselves. You cannot expect anybody to give you self-esteem or to make you feel good or make you feel better unless you do that to yourself. Self-esteem is a product of your own doing and being. You cannot allow another person to make you realize what your self-esteem is. Don't give a remote to everybody, na? Don't make them make you feel, Are, you're not looking good. Are, you're not doing well. Are, you're not good at this at all. It's okay. Let them say what they want. You should know what you're good at. And that comes from clarity of thought, clarity of vision, clarity of what are you doing in your life. आप कर क्या रहे हो अपने जिंदगी के साथ? आपका पर्पस क्या है? ये सब चीजें अगर आप जान जाओगे और आपका मूल्य क्या है आपकी आंखों में. मेन थिंग इज हमें अपने आंखों में अपना मूल्य ढूंढना है. डोंट एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू मेक यू अ ज्वेल, अ वैल्यूएबल ज्वेल. जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल ना समझोगे. बहुत आसान चीज है. एक जौहरी जानता है कि ये जेम का क्या रेट है. अब वही जेम किसी और को बताओ, वो बोलेंगे 1000 रुपए का होगा, 2000 का होगा, हालांकि लाखों का होगा. लेकिन जो जौहरी है वो जानता है. तो जब हम हैं, हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी वर्थ क्या है. And no, you don't have to make your worth in millions and zillions. You have to make your worth in what are you in this world? What are you representing? Who are you? What is your goal? And how do you actually really become that self-esteem? How do you become that strength? Very simple. First things first, look in the mirror and love yourself. When you look in the mirror, you have to tell yourself, Nam, I love you and I own you for whoever you are. Whatever you are, I love you. I own you. You have to feel owned by yourself. That means your heart, your mind and your soul have to be in alignment. जब हमारी alignment नहीं होती है ना, तो self esteem out of the window. फिर हम सोचते हैं कि मैं कर क्या रही हूँ अपने जिंदगी से, बोल कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ, पहन कुछ रही हूँ. इट्स ऑल बिखरा हुआ. जब आपको समेटना है सब कुछ, तो पहले अपने आप को पहचानो, पहले अंदर झांको, मेडिटेशन करो सवेरे उठ के. मैं रोज सुबह 5 बजे मेडिटेशन क्लास चलाती हूँ, और जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे क्लिक कीजिए मेडिटेशन, और हमारी टीम आपको फोन करेगी या मैसेज करेगी, और आप हमारे सुबह 5 बजे के मेडिटेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. आई थिंक 1 महीने में आपकी सेल्फ एस्टीम विल हिट द रूफ, बिकॉज वी टीच यू टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ विद इन. एक माँ जानती है कि उसका बच्चा कितना प्यारा है. She looks at her child and she realizes he is my amulya. When we look at ourselves in the mirror, the first thing we do is let ourselves down. We don't love ourselves enough. We don't think we are good enough. We find fault in ourselves.
जब एक बॉडी अपने सोल को बोलेगी यू आर नॉट गुड इनफ, व्हाट इज द सोल गोइंग टू फील? डिसकनेक्टेड. अलाइनमेंट कहां से होगा? When you want a mind, body and soul alignment, you have to first align with your soul. That means as a person, you have to love the soul inside of you. You have to love who you have become. You have to love your body. You have to love yourself. You have to love every bit of you. Your nature, who you are, how you behave. You have to own everything. Don't compare yourself to anyone. Don't ape anybody. It doesn't make sense. You have to love yourself completely. और ये प्यार कब आएगा पता है? जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे और वैल्यूएबल समझोगे. एक प्रोफेसर था, वो स्टूडेंट्स को 500 रुपए का नोट दिखा रहा था और उसने कहा इसका क्या वैल्यू है? This is 500. Then he turned it around and he said, मैंने बेंड किया, अब क्या वैल्यू है? Sir, 500. 4 times he went around. He says, yes, ये अब क्या है? Sir, 500 sir. 8 टाइम उसका छोटा सा कॉइन बना दिया. सर 500. फिर उसको नीचे फेंका जमीन पे रोल करके. अब क्या वर्थ है? सर 500. उसको निकालो, सीधा करो, आयन करो. लेकिन हम क्या करते हैं? हर सिचुएशन में हमारी सेल्फ एस्टीम बदल जाती. थोड़ा कोई बेंड आ जाए लाइफ में, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्थ इट, ये मेरा नसीब है, बैड लक इन माई लाइफ. 4 टाइम फोल्ड हो जाओ तो ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरा पैटर्न ही गलत है. 8 टाइम फोल्ड हो जाओ, प्रेशर बढ़ जाए, आई एम फिनिश, माई लाइफ इज गोइंग नोवेयर, आई एम सो अनहैप्पी, आई डोंट थिंक आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू. You just start buckling under pressure. But the true worth of you, the true worth of yourself will happen when you take your life in your control and decide, whatever life does to me, whatever life shows me, I am going to stand strong. I am going to show what my self-worth is. And I am going to be the person who comes out a winner. Because you suddenly realize that you are not the problem. You are not the situation. You are who you are. Your self-worth is not defined by your external circumstances. That means कोई भी कठिनाई आए लाइफ में, कुछ भी तकलीफ आवे, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और आप अपना सेल्फ-वर्थ कुछ भी हो जाए कम नहीं करोगे. यानी ये चाहे कुछ लो भी तो 500 होता है. चाहे लाइफ आपको कुछ भी सबक सिखाए, कोई भी कठिनाई दिखाए, कुछ भी आगे आए, आप अपने आप का कॉन्फिडेंस नहीं खोगे. उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम. एंड ये जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, ये हम खुद बना सकते हैं और कोई नहीं बनाएगा हमारे लिए. इफ वी थिंक कि कोई आके मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा, बैठे रहो, कोई नहीं आएगा. कैंडल लेके बैठे रहो, कोई तो आएगा, कोई नहीं आता. Nobody is coming. You have to create your self-esteem on your own, and that is, you have to believe in yourself. You have to have self-belief, and your belief system has to be pakka, like iron. Your values have to be solid. You have to rest your conversation and your foundation on values, beliefs that belong to you, not to anybody else. You are the creator of your belief system. You are the creator of a foundation that's strong. You have to learn your life to live your life to, you have to live your life with integrity. And that integrity comes from self-esteem, where you will not compromise on anything because you believe you can achieve it. And you believe that you are who you are. And nothing is going to define you other than who you have become. चाहे कोई circumstance आ जाए, stand tall, because that is what is going to be you. Look at the Mahatma Gandhi. What all did he go through? He went in prison. He was beaten. He was tortured by the Britishers. There were so many problems, but he stood focused. He never dropped his self-worth. And he didn't care what anybody did or said. He wore his loincloth
and went, whether it was cold, whether it was hot, he just stood tall. Till today, everybody remembers the Mahatma. Why? Because he didn't let himself down. Just because he was in prison doesn't mean he gave up the fight for freedom. Just because the British challenged him doesn't mean he gave up the fight for freedom. His core values, his strength was so strong, his self-esteem was so high. And that is something you can build. Do not mix self-esteem with arrogance, because arrogance comes before a fall. You cannot be proud. Self-esteem is your self-worth, who you are and what do you want to become in your life. And that self-esteem comes from knowing who you are. What is your inner clarity? How would you like to portray yourself? What is the image you're creating of yourself? And how do you want to lead a happy life? Friends, please click the link below. Join us for our programs. Be in touch with us. Connect with me. You have any self-esteem issues, put in a question. I'll be so happy to answer it. Stay connected. Write to me. I'd love to hear from you. And of course, if you want to join my meditation, don't hesitate. I'd love to see you in the morning at 5 a.m.